गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रीसेटिंग इंडिया कनाडा रिलेशंस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और कनाडा जो है उन्होंने अपने सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं रीसेट करने के लिए स्ट्रेन्ड बायलैटरल टाइज को ड्यूरिंग रिसेंट विजिट ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने टू इंडिया। तो इंडियन पीएम के साथ उन्होंने जो भी टॉक्स की हैं वो रीबिल्ड करने के लिए की गई हैं स्ट्रेटजिक ट्रस्ट को, और एनहेंस करने के लिए की गई हैं इकोनॉमिक टाइज को। ठीक है। तो ये फर्स्ट फुल बायलैटरल विजिट है, फर्स्ट फुल बायलैटरल मीटिंग है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, जब लास्ट जस्टिन ट्रूडो आए थे 2018 में। और लीडर्स ने जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया में उसको भी डिस्कस किया है। तो मेजर आउटकम्स अगर हम देखें तो इंडिया और कनाडा ने साइन किया है $1.9 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट 10,000 टन्स का अगले 2027 से 2035 के बीच में। कनाडा की कंपनी है कैमेको, वो सप्लाई करेगी यूरेनियम इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी, और इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी एनहेंस होगी। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी डिस्कस किए गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जो है उसको फाइनलाइज किया गया है ताकि बायलैटरल ट्रेड बूस्ट हो 2030 तक। इससे जो है दोनों साइड्स ट्रेड डिपेंडेंस यूएस पर कम करना चाहती हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को। इंडिया और कनाडा ने एग्री किया है कोऑपरेट करने को यूरेनियम सप्लाईज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एलपीजी सेक्टर में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में और एडवांस्ड रिएक्टर्स में। एक तरह से शिफ्ट है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी कॉपरेशन और एनर्जी ट्रांजिशन। कनाडा ने एग्री किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन करेंगे। दोनों साइड्स ने एग्री किया है कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए काउंटर टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम और इंटेलिजेंस शेयरिंग में। इवन एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म भी जो है वो कन्वेन करने को कहा गया है। अगर हम देखें तो जो है इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स मिलेगा, एनर्जी रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेगा, फिर रिलायबल यूरेनियम सप्लाई मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन के लिए, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल कॉपरेशन होगा, फिर एक G7 पार्टनर से हमारी टाइज इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कनाडा और इंडिया जो है वो फॉर्मली एक दूसरे को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप उन्होंने डिक्लेयर कर चुके हैं 2018 में। इंडिया कनाडा का लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है फॉर मोस्ट इमिग्रेशन कैटेगरीज। इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स वहाँ जाते हैं वो है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, आयरन एंड स्टील, सी फूड, कॉटन गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड केमिकल्स। वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है पल्सेस, पर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कोल, फर्टिलाइजर, पेपर एंड पेट्रोलियम क्रूड। तो निजर की जो कंट्रोवर्सी हुई थी किलिंग की और डिप्लोमेटिक टेंशन 2023 से चलती आ रही हैं। कनाडा एक सेफ हेवन बन चुका है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का। फिर जो सीपा है उस पर भी नेगोशिएशंस लॉन्ग पेंडिंग है, और यूरेनियम एग्रीमेंट जो पहले किए गए थे वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसलिए रिलायबल सप्लाई कमिटमेंट्स की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो एग्जामिन करेंगे कि क्या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है वो कंपलसरी होने चाहिए ब्लड बैंक्स में, ताकि सेफर ब्लड ट्रांसफ्यूशन प्रैक्टिसेस हो सकें। ठीक है। तो ये मैटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने आया है और दो अदर जजेस के बेंच के सामने, क्योंकि एक एनजीओ ने पटिशन फाइल किया कि मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए नैट की अक्रॉस अक्रॉस ऑल ब्लड बैंक्स इन इंडिया। तो पटिशनर ने आर्ग्यू किया कि राइट टू सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नैट जो है वो सेफर है, मोर सेंसिटिव है टेस्टिंग मैकेनिज्म। ठीक है। तो नैट है क्या? एक हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक जो डिटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए और आरएनए को, मतलब बेसिकली वायरसेस के डोनेटेड ब्लड में। तो ये केपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए इन्फेक्शन जैसे HIV या हेपेटाइटिस बी या सी। नैट जो है वो विंडो पीरियड जो होती है बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्टेबिलिटी उसको रिड्यूस कर देती है। बहुत से ब्लड बैंक्स इंडिया में प्राइमरीली जो है एलिसा टेस्ट यूज़ करते हैं जो लेस एक्सपेंसिव हैं लेकिन लेस सेंसिटिव हैं अर्ली इन्फेक्शन स्टेजेस में। पटिशनर ने इसलिए आर्ग्यू किया है कि एक्सेस टू सेफ एंड इन्फेक्शन फ्री ब्लड इंटीग्रल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ का, और उसको आर्टिकल 21 में एक्सपेंसिवली रीड किया जाए। इस कंटेक्स्ट में इंश्योर करना कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट बन जाता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो इस हेयरिंग में बेंच ने क्वेश्चंस रेज किए कि क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है इसकी नैट को मैंडेटरी करने की सभी स्टेट्स में। कोर्ट ने कहा कि क्या
इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगी नैट को गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स में। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन्स जो है वो स्टेट्स को अफेक्ट कर सकेगा जिनकी लिमिटेड फिस्कल कैपेसिटी है। तो कोर्ट ने इसलिए कहा कि जो है डेटा दिया जाए कि स्टेट हॉस्पिटल्स क्या कौन कौन से जो है वो नैट यूज़ कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और स्टेट्स जहाँ पर ये ऑपरेशनल है ऑलरेडी। तो कोर्ट बेसिकली डेटा ड्रिवन अप्रोच जो है कंसिडर करना चाहता है बिफोर मैंडेटरी रोल आउट। तो इशू ने जो है अर्जेंसी गेन कर ली है बिकॉज ऑफ रिपोर्टेड केसेस ऑफ चिल्ड्रन कॉन्टैक्टिंग HIV ड्यू टू कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। थैलेसीमिया पेशेंट्स से रिलेटेड कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे, खासकर जो है इंसिडेंट्स हुए मध्य प्रदेश और झारखंड में, और उनको कहा गया कि ये प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज़ थी। ठीक है, तो ब्लड सेफ्टी जो है इंडिया में वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर रेगुलेटेड है, और मैंडेटरी स्क्रीनिंग चाहिए होती है। टेस्ट होते हैं उसमें HIV के, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, सिफिलिस, इस सीरोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अपना 70th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है रिसेंटली। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। एक मेजर लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंडिया में। इसके ओरिजिन अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हैं, और ये जब एक सेपरेट फूड डिपार्टमेंट जब क्रिएट किया गया था 1942 में फूड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये साइंटिफिक स्टोरेज, हैंडलिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर फूड ग्रेन्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए हमें देता है, और इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंप्रूव करता है सप्लाई चेन एफिशिएंसी को, और हेल्प करता है रिड्यूस करने में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को। ठीक है, और ये की रोल प्ले करता है मेंटेन करने में बफर स्टॉक्स को, और इंश्योर करता है नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओलियम गैस। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मेजर ओलियम गैस लीक हुआ है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन की गई है 2000 रेजिडेंट्स की। तो ओलियम जो है इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। हाईली कोरोसिव केमिकल है जो फॉर्म होता है बाय डिजॉल्विंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिलीज करता है डेंस वाइट फ्यूम्स जब ये एक्सपोज होता है मॉइस्ट एयर को। तो कैसे बनता है ये? बर्निंग सल्फर को जो है वो सल्फर को बर्न किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है SO2 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है SO3 को मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड को इनटू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे ओलियम बनता है। ये प्रोसेस डायरेक्टली अवॉइड करता है डिजॉल्विंग SO3 इन वाटर। तो इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, ये डेंस वाइट स्मोकी फ्यूम्स फॉर्म होते हैं इसके, और जब ये मॉइस्ट एयर में रिलीज होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन लिक्विड भी होता है ये 0 डिग्री पर जब पहुंचता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाईली कोरोसिव है, रैपिड हाइड्रेशन होती है इसको जब वाटर या मॉइस्चर में एक्सपोज हो, और ये एक तरह से यूज़ किया जाता है इंटरमीडिएट की तरह प्रोड्यूस करने के लिए इस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सेफली, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल टैंक कार्स में, और इसका मेजर रोल होता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एसिड प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टिल मिसाइल्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5000 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है स्ट्रेंथन करने के लिए दिया है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जिसमें प्रोक्योरमेंट होंगे स्टिल एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इंडियन नेवी वॉरशिप्स के लिए। तो एक शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डिप्लॉय किया जाता है इसे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर, ताकि मीडियम रेंज एयर डिफेंस देता है ये मैरीटाइम कॉम्बैट एनवायरमेंट्स में। डेवलप किया गया है बाय रशियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़, और ये डिराइव होता है बुक फैमिली ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल जो रशिया यूज़ करता है, और ये हमारी स्ट्रेंथन करेगा लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ नेवल फ्लीट्स, और ये इंटरसेप्ट कर सकता है एयरक्राफ्ट, UAVs और एंटीशिप मिसाइल्स। डिज़ाइंड है ये क्विक इंटरसेप्शन ऑफ इनकमिंग एरियल थ्रेट्स के लिए, वर्क करता है विद नेवल रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं करबी आंगलोंग जिंजर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। असम ने जो है एक मेजर एग्रीकल्चरल माइलस्टोन अचीव किया है, फर्स्ट एवर ट्रायल एक्सपोर्ट किया है 1.2 मेट्रिक टन्स ऑफ GI टैग कार्बी आंगलोंग जिंजर टू लंदन। ये एक प्रीमियम वैरायटी ऑफ जिंजर है जो कि अपनी डिस्टिंक्ट अरोमा, स्ट्रॉन्ग पंजेंसी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इसको GI टैग मिला है रिसेंटली, और कल्टीवेट किया जाता है करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में। अपनी स्ट्रॉन्ग अर्दी फेवर के लिए जाना जाता है,
वाइडली यूज्ड है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में डाइजेस्टिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के लिए, और इसको एज ओल्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस से प्रोड्यूस किया जाता है मिनिमल केमिकल इनपुट्स के साथ। जीआई टैग से इसकी मार्केट रिकॉग्निशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ चुका है, और ये वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और रीजन स्पेसिफिक ब्रांडिंग इंडिया में सपोर्ट करता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is resetting India-Canada relations. This topic is important for your international relations. India and Canada have taken significant steps to reset strained bilateral relations during the recent visit of Canadian Prime Minister Mark Carney to India. Talks with Indian Prime Minister focused on rebuilding strategic trust, enhancing economic ties, and strengthening cooperation in energy and security. This visit is marking first full bilateral Canadian Prime Minister visit since Justin Trudeau's 2018 trip. Leaders have also discussed escalating conflict in West Asia. So, India and Canada signed a $1.9 billion uranium supply agreement for 10,000 tons for the next 7 or 8 years. Canadian company Camco will supply uranium for Indian nuclear power plants to support India's civil nuclear energy program. This will enhance India's energy security. Terms of reference for the Comprehensive Economic Partnership Agreement were also finalized to boost bilateral trade by 2030. This will reduce trade dependence on the US. It will diversify global economic partnerships. India and Canada have agreed to cooperate on uranium supplies, uranium renewable energy, LPG sector, nuclear technology, small modular reactors, and advanced reactors. This reflects a shift towards clean energy cooperation and energy transition. Canada agreed to join the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance. So, both sides have agreed to strengthen cooperation in counterterrorism, violent extremism, organized crime, and intelligence sharing. They have agreed to convene the Joint Working Group on Counterterrorism as well. So this will be strategically significant for India because we will be getting access to critical minerals, energy resources, and advanced technologies. There will be reliable uranium supply for nuclear energy expansion. Nuclear and renewable cooperation supports low carbon growth. This will also strengthen ties with a key G7 partner. So, Canada and India share over 75 years of diplomatic relations, which were formally designated as a strategic partnership in 2018. India is Canada's largest source country for most immigration categories. Key exports from India include drugs and pharmaceuticals, iron and steel, seafood, cotton garments, electronic goods, and chemicals, among others. Key imports from India include pulses, pearls, and semi precious stones, coal, fertilizer, paper, and petroleum crude. So, there were controversies regarding Niger, and diplomatic tensions prevailed since 2023. India is having a major concern over safe havens given to separatist groups in Canada. There was long pending CEPA negotiations due to regulatory differences. Earlier uranium agreements did not fully deliver, so there was need for reliable supply commitments. So the next topic is nucleic acid test. This topic is important for your social issues and science and tech section. Supreme Court has agreed to examine whether the nucleic acid test should be made compulsory in blood banks to ensure safer blood transfusion practices. The matter came before a bench of Chief Justice of India and two other judges when a petition was filed by an NGO seeking mandatory implementation of NAT across blood banks in India. The petitioner argued that the right to safe blood transfusion forms part of the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution. The plea has emphasized that NAT is a safer and more sensitive testing mechanism compared to existing screening methods. So, NAT is a highly sensitive molecular diagnostic technique which detects the genetic material of viruses in donated blood. It is capable of identifying infections like HIV, hepatitis B, and hepatitis C. Unlike traditional serological tests, NAT reduces the window period, the time between infection and detectability, thereby enhancing blood safety. Currently, many blood banks in India primarily use ELISA tests, which are less expensive, but they are comparatively less sensitive during early infection stages. So, therefore, petitioner has argued that access to safe and infection-free blood is an integral component of right to life under Article 21, if interpreted expansively. So, in this context, ensuring safe blood transfusion aligns with constitutional obligation of state to protect public health. The bench has raised several questions regarding the financial feasibility of making NAT mandatory across all states. Court has asked whether economically weaker states would be able to afford NAT in government banks and hospitals. So, court has highlighted that additional financial burdens could affect states with limited fiscal capacity. Therefore, they have asked for data from the petitioner
detailing whether state hospitals currently using NAT, in how many hospitals is it implemented, states where it is already operational. So court is adopting a data driven approach before considering mandatory nationwide implementation. So this issue has gained urgency due to reported cases of children contracting HIV due to contaminated blood transfusions, especially with cases related to thalassemia patients. The case. The cases were reported from some states like Madhya Pradesh and Jharkhand, and they are being described as preventable tragedies in the petition. So, blood safety in India is regulated under the Drugs and Cosmetics Act of 1940. So currently, mandatory screening includes tests for HIV, hepatitis B, C, malaria, and syphilis using serological methods, and NAT is not uniformly mandated across all blood banks. So the next topic is Central Warehousing Corporation. This topic is important for your governance section. So CWC has celebrated its 70th Foundation Day on March 2nd. So it's a central public sector enterprise under Ministry of Consumer Affairs. It functions as a major logistics and warehousing organization supporting food security, agriculture storage, supply chain management in India. Its origin can be traced back to World War II, when a separate food department was created in 1942 for food administration. It aims to provide scientific storage, handling, logistics support for food grains, essential commodities. It aims to strengthen India's food security system and reduce post-harvest losses. It aims to improve supply chain efficiency and help reduce national logistics costs as well. It plays a key role in maintaining buffer stocks and ensuring nationwide distribution of essential commodities. Ministry of Consumer Affairs is the nodal ministry for the same. So the next topic is oleum gas. This topic is important for your environment section. A major oleum gas leak at Boisar, Maharashtra has forced the evacuation of over 2,000 residents. So oleum is commonly called as fuming sulfuric acid, and it is a highly corrosive chemical formed by dissolving sulfur trioxide in concentrated sulfuric acid. It releases dense white fumes when exposed to moist air. It is produced through the contact process, which includes burning sulfur to produce sulfur dioxide, oxidizing sulfur dioxide to sulfur trioxide, absorbing sulfur trioxide into concentrated sulfuric acid to form oleum. This process avoids directly dissolving sulfur trioxide in water. Uh, it forms dense white smoky fumes when released into moist air. It varies with its freezing point varies with concentration. It may be solid at room temperature or remain liquid near 0 degrees Celsius. Its chemical properties include that it is a strong dehydrating agent. It is highly corrosive. It rapidly hydrates when exposed to water or moisture. It is used as an intermediate for producing concentrated sulfuric acid safely. It is often transported in rail tank cars as a stable form for moving sulfuric acid compounds. It plays a significant role in chemical manufacturing, explosive production, and industrial acid processing. So the next topic is still missiles. This topic is important for your security section. Ministry of Defense has signed a 5,000 crore defense contract to strengthen India's maritime security, including procurement of still surface-to-air missiles. So it's a ship-based surface-to-air missile system which is deployed on frontline warships to provide medium-range air defense in maritime combat environments. So it is developed by Russian defense industries with exports managed by JSC, Rosobo, Rono Export. It is derived from the Buk family of air defense missiles used by Russia. So the aim is to strengthen the layered air defense system of naval fleets. It is capable of intercepting aircraft, UAVs, and anti-ship missiles. It is designed for quick interception of incoming aerial threats, and it works with naval radar and fire control systems for accurate targeting, tracking, and engagement. So the next topic is Kirby Anglong Ginger. This topic is important for your security for your economy section. So Assam has marked a major agricultural milestone by flagging off its first ever trial export consignment of 1.2 metric tons of GI tagged Karbi Anglong ginger to London. So this is a premium variety of ginger known for its distinct aroma, strong pungency, and medicinal properties. It has received a GI tag already due to its unique origin and quality. It is cultivated in the Karbi Anglong district of Assam. It is known for its strong earthy flavor. It is widely used in traditional medicine for digestive and anti-inflammatory benefits. It is produced using age-old farming practices. GI tag increases its market recognition and export potential. It supports
added agriculture exports and region specific branding in India. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.